So the question is, what is Omicron? Omicron is one of the mutant strains of COVID-19 which has been ravaging the world over for last 2 years. So what is mutant? That is change in some genetic sequences which leads to a different strain. So in simple terms, I would like to say, so what is the difference between an Indian and an Australian? So there are some genetic changes, slight bit of it, physical changes, some mental changes. Those are basically detected by the genetic mutations. Now, what is the significance of Omicron? Now, this is the third wave which is coming of the COVID, and this will primarily be led by the Omicron variant. But mind you, Delta variant or Delta plus variants which were earlier present will also be part of it. So how is it different from the previous mutations which were present in the COVID strains? Now what we have seen here in Omicron cases is that the symptoms are a little different from the Delta and Delta plus variants. Little different in the sense that you won't have those typical symptoms of loss of taste and loss of smell. You won't have too much of shortness of breath. You won't have too much of fever. So primarily the patients will present with say I am having fatigue, I am having lot of malaise, I am having nausea, मुझे बहुत थकान हो रही है, मेरे को चलने फिरने में दिक्कत है, मेरे को काम करने में दिक्कत है. Some people might present with features of flu. कुछ लोग बोलेंगे कि हाँ मेरे को जुकाम भी लग रहा है. तो कुछ डिफरेंसेस हैं इसमें. और अभी तक जो पाया गया है कि percentage of people who are having severe disease are much less in Omicron cases as compared to the earlier mutations of Delta and Delta plus, and that may be primarily due to the effect of vaccinations also, that vaccinations have reduced the severity of Delta and Delta plus, and maybe possibly also Omicron also. So the Omicron is a milder disease at the moment, but you cannot definitely say so. We have already seen 1 or 2 deaths occurring because of Omicron. So be careful. Don't worry about which strain is there. Take it as dangerous as the last COVID also. तो ओमिक्रॉन जो है वो बाकी जो पहले के वेरिएंट से उनसे ज़्यादा तेज़ी से फैलता है. That it is more infectious. It spreads very easily. बहुत ज़्यादा लोगों को बहुत जल्दी से फैल जाता है ये. तो बेसिकली हमारे को प्रॉब्लम ये है कि कौन से लोग इनमें बच के रहें. जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है जो फर्स्ट और सेकेंड वेव में थी वो सेम ही पॉपुलेशन इसमें भी है तो ये कोविड वायरस ही. तो बेसिकली जो एल्डरली हैं, जो डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, वो लोग जो हैं वो इनसे बच के रहें. तो जिन लोगों को दोनों वैक्सीन्स या कुछ को एक वैक्सीन लगी है, उनको क्या ओमिक्रॉन से डरना चाहिए? हाँ, बिल्कुल डरना चाहिए. ओमिक्रॉन की इन्फेक्टिविटी कम नहीं होगी वैक्सीन से, बट हाँ क्योंकि स्ट्रक्चरली सेम है, कोविड ही है ये भी, तो उसका जो प्रभाव है वो डेफिनेटली कम हो जाएगा, या जिसको हम बोलते हैं सीवियरिटी ऑफ द डिजीज़ जो है दैट विल गेट रिड्यूस्ड, डेफिनेटली गेट रिड्यूस्ड. Like we had seen in the Delta and Delta plus variants also, those people who had full vaccinations like healthcare workers, in the second wave they did not have too much of severe diseases, and that is what we are also experiencing this time also. So let the studies come, but I am hopeful that the Omicron will remain a milder disease, but we all have to be careful also. We've seen 1 or 2 more deaths which have now been reported because of Omicron. It is not that all people will have mild disease. Some people will definitely, especially the vulnerable groups, will definitely go into severe category. So all need to be careful about this thing.
So what I would say is, get everybody vaccinated as soon as possible. Keep the mask on. Mask should be a part of your daily life. Mask should always be there. You should clean your hands, and if there are any symptoms around you, people who have symptoms around you, they should be careful enough to not go out, and they should also themselves self-isolate. That is the only way in which this thing can work. There can be other variants also which will come later on, say Omicron goes and other variant comes. So I think this is the way life has to be, and everybody has to be careful, and that is the only solution of it. There is nothing else, and all should get vaccinated. So what does a vaccine do basically? Vaccine induces some antibodies in the system which will prevent the disease to be severe, and maybe in some cases decrease the infectivity. Now the healthcare workers had their last dose in about March last year, and these antibodies remain for 3-4 months to a sufficient level, and in some cases up to 6-7 months. So it is a possibility that those people who had 2 doses, and that too about 6 to 7 months ago, will have lesser antibodies, and now needs another booster dose to increase those level of antibodies so as to have adequate protection. देखिए, अभी एक जनरल भावना बन गई है सब में कि ओमिक्रॉन जो है वो एक माइल्ड डिजीज़ है या बहुत ख़तरनाक बीमारी नहीं है. इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए अभी बहुत कम केसेस हैं हमारे पास. ठीक है, अगर हमारे पास मान लो 100 केसेस हैं, 100 में से 1 या 2 बीमार पड़े हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत सारे केसेस जो है, अब आप वही बात है कि आप 1 लाख केस हो जाएंगे तो उसमें दिखेंगे कितने आते हैं. अगर 1 लाख में 100 केस भी सिक हो गए या वेंटिलेटर पे चले गए तो वो सिग्निफिकेंट है एटलीस्ट उन 100 लोगों के लिए. बट हाँ, ये बात सही है कि ये जो सेकेंड वेव आई थी उससे अभी तक जितने भी केस आए हैं उससे अभी कम डेंजरस लग रहा है. उससे कम पेशेंट्स वेंटिलेटर पे जा रहे हैं, कम पेशेंट्स आईसीयू में जा रहे हैं और कम हॉस्पिटलाइजेशंस हो रही हैं. बट ये आगे भी ऐसा ही चलेगा, इसका कोई अभी गारंटी नहीं है. Omicron is one of the variants of the COVID and the impending third wave. Never forget that it will also include Delta and Delta plus variants which were earlier, which has ravaged the society in the last wave. Be careful. Don't be in the impression that Omicron is a mild disease and it will not have any effect. I see lot of people saying this कि Omicron से कुछ नहीं होगा, हमारे को वो mild disease है. माइल्ड डिजीज़ है, बट आप 100 में से अगर एक वो हुए जिसमें सीरियस होना है तो आपके लिए तो वो डेल्टा प्लस से भी डेंजरस है. तो और आपके घर वालों के लिए भी. सो दैट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द सोसाइटी इज़ नॉट देयर, है ना. मैं ठीक हूँ, मैं ठीक रहूँगा, मेरी वैक्सीनेशन हो चुकी हैं, मेरे को कुछ नहीं होगा, मैं यंग हूँ. अरे घर में आप जाओगे, आपके माता पिता हैं, आपके दादा दादी हैं, उनको आप दोगे. और बहुत सारे पेशेंट हमारे पास हो चुके हैं ऐसे, यंग लड़के घूमते हैं, लड़के लड़कियां घूमते हैं, हमें कुछ नहीं होगा, और उनके दादा जो हैं वो एडमिटेड हैं और कुछ लोग नहीं सर्वाइव कर पाए. तो फिर आप हेल्थ केयर सिस्टम को बोलोगे ऐसा, ये दवाई वो दवाई. आपको पता है कि वायरसेस की बहुत अच्छी कोई मेडिकेशंस अल्टीमेटली नहीं होती हैं. कुछ हमें सिस्टम समझ आया है कि इसको इलाज कैसे करना है, बट हर किसी में वो कामयाब नहीं होता है. तो इसका मतलब यही है कि प्लीज़ बी केयरफुल, एंड मास्क एंड हैंड सैनिटाइजेशन इज़ अ मस्ट फॉर ऑल, and social distancing, which is missing at the moment also. A lot of people are roaming around in the markets. I think the society at large needs to be careful about this thing.